Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of January 24th, 2024. First one, Maldives rules out the research by Chinese vessel in its water. Just after the thaw in relationship between the India and Maldives, Maldives have allowed the Chinese vessel to participate in its research facility. The research vessel is expected to reach Maldives by early February. This may important keyword port of call. So what is port call? It is a docking of the commercialized vessel, that is ship, in the nearby port. पोर्ट कॉल होता है यूपीटी में पूछ भी सकते हैं पोर्ट कॉल. India has voiced concern over visit of by the Chinese vessel, whereas the Ministry of Foreign Affairs have said diplomatic request was made by the government of China to the government of Maldives for necessary clearance for make a port call for rotation and personnel and replacement. तो रिसर्च वेसल हो सकता है कि द रिसर्च वेसल कैन कंटेन द radar technology. It can contain some other things which is harmful for the Indian national security in that region. That is, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था पिछले साल. Kheda flogging is a case of police atrocity. 2022 incident of Gujarat police officer publicly flogging Muslim men after tying them to the pole after allegedly disrupting a Garba event in Kheda district. It is amounting to the atrocity by the police. DK Basu guideline judgment we discuss in detail. The Supreme Court in DK Basu judgment of 1996 against the police abuse and custodial violence have said that there has to be some form of transparency, objectivity with regarding to the treatment of the criminals. Police is no bond under legal duty and has a legitimate right to arrest criminal and integrate him during the investigation of offense. But if there is uh, a crime, there has to be some due process. जो डीके वास्तु गाइडलाइन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्च एंड सीजर में कैमरा होना चाहिए, इंटीग्रेशन में भी कैमरा होना चाहिए. सेकंड, बॉडी कैम का बात होता है. थर्ड, कि एक ऑफिसर होने चाहिए, पुलिस महिला पुलिस ऑफिसर भी होना चाहिए विद रिगार्डिंग टू द विमेन इंटीग्रेटर. और he talked about the sensitization of the police forces so that the society is free from such torture and abuse by the police and law enforcement agency. तो ये एग्जांपल ले सकते हैं 2022 इंसिडेंट ऑफ गुजरात पुलिस ऑफिसर. और दूसरा एग्जांपल था जो टू क्रिश्चियन फादर एंड चाइल्ड डुओ इन तमिलनाडु बाय द यंग आईपीएस ऑफिसर. दो केस ले सकते हैं. HC High Court has directed the National Testing Agency to ensure it uploads the final answer key of the common suit. NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. इट इज अ इंटीग्रल टेस्टिंग एजेंसी फॉर ऑल. हर एक एग्जाम में इसको इंक्लूड किया जाता है. क्लास 6 स्टूडेंट डाइज 9 days आफ्टर सीनियर थ्रैशिंग. School ignored complaint. This is a case of ragging. Ragging is a very immoral thing to do, but the student that are participating in ragging, they derive pleasure from thrashing and ridiculing their own seniors. तो इसको सेंसिटाइजेशन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि वो बच्चे हैं, 14 साल से नीचे होते हैं. वो बाद में भी होता है, 18 years अब भी होता है इन कॉलेज कैंपसेस, जहाँ पर प्रोविजन लिया गया, स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग मेजर्स लिया गया इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. और ये लेकिन बच्चे हैं, तो यहाँ पर सेंसिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है. पीटी मीटिंग इज इम्पॉर्टेंट टूल टू मेक स्टूडेंट अडियर टू सच पनिशमेंट. कैमरा होना चाहिए क्लासरूम में और बाकी कैंपसेस के कॉरिडोर में ताकि पता लग सके. Begin de-sealing of shops, Mayor tells MCD commissioner.
accusing of stalling the process desealing of shop at central local shopping facility despite municipal corporation. तो इसमें बात कर सकते हैं कि ऑफिशियल और काउंसिल, मेयर मेयर का पावर विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू द लोकल बॉडीज वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ही शी इज द चीफ ऑफ द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन द एमसीडी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो सकता है, म्यूनिसिपल हर जगह हो सकता है एमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें ऑफिशियल वर्सेस काउंसिलर, जो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और जो काउंसिलर जो चुन के आते हैं, उनके बीच में वेरियस डिसीजन मेकिंग में तनाव होता है, टकराव होता है। द ऑर्डर ऑफ द जुडिशियल कमिटी ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑफिशियल एंड द काउंसिलर। तो एक पॉइंट यहाँ से उठा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लोकल गवर्नेंस। तो पार्लियामेंट ब्रीच आइडियोलॉजी, द अक्यूज वे सेल्फ फंडेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड टू डू समथिंग बिग फॉर फेम। द फेम ड्राइव्स ए पर्सन। हो सकता है कि आइडियोलॉजी रिलीजियस पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है, फेम पावर मनी, तो इसमें फेम। येलो कैनिस्टर, येलो गैस फ्रॉम कैनिस्टर एंड shouted स्लोगन बिफोर being powered by overpowered by MPs. They had created Bhagat Singh fan club for the like-minded people to join the motive. Karpoori Thakur has been awarded Bharat Ratna today, and उनका रोल रहा है, I have already stated कि मुंगेरी लाल कमीशन during 1970 he was Jan Nayak. He participated in the JP आंदोलन movement in 1970s against the Indira Gandhi. Or after the becoming chief minister, he started various policies with respect to the education and more representation from the SC to OBC. The Mungeri Lal Commission was the first which talked about the subcategorization and also the पिछड़े में अति पिछड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे। तो उन्हीं के बारे में our prime minister have penned his thought. Twin pillars of simplicity and social justice, simple lifestyle, humble nature, deeply connected with the common people. Social justice, democracy, debate and discussion were integral part of the Karpuri ji Thakur personality. तो बोल रहे कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट टुडे, व्हाट वी आर डूइंग विथ रिगार्डिंग टू द हिज विजन। तो पहला बात है कि मुद्रा लोन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी विश्वकर्मा के लिए, प्रोवाइडिंग एवेन्यूज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर करोड़ ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द ओबीसी कम्युनिटी, विश्वकर्मा स्कीम इंपॉर्टेंट। दूसरा, मुद्रा लोन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, इकोनॉमिक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए। फिर विमेन से रिलेटेड जो भी स्कीम हो गया उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और इनका रोल वैसे ही रोल जैसे राम मनोहर लोहिया जी सोशलिस्ट थे, और चरण सिंह जी जेपी जयप्रकाश नारायण जी उनको भारत में मिला था। उनको लोक नायक बोलते हैं, इनको जन नायक बोलते हैं। ओवरऑल यही। ही वॉज ट्रू जन नायक। फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट इन यूपी गौतम बुद्ध नगर in alleged violation of COVID-19 protocol imposed under Section 144 CRPC by him 2 years ago। तो बाय हिम 2 years ago और उन्हीं पर लगा। तो ये दिखाता है कि जो इंडिया में जो रूल एंड रेगुलेशन है कैसे फॉलो किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ पावर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर में। ही हैड ओनली इम्प्लीमेंटेड इम्पोज्ड द कोविड-19 प्रोटोकॉल, और उनको पर ही लगा था कि उन्होंने ही हैड ब्रोकन द प्रोटोकॉल, उसके बाद ही इनका केस लगा था। तो ये
Pudukkottai. More than a year after a human feces of found floating in a supplied drinking water. So 31% case DNA have failed to match. Polygraph test important, it is a part of the investigation. तो पॉलीग्राफ, तो इसमें वही था ना प्रवेश, जिसमें आप बीपी चेक करते हो, ओवरऑल हार्ट बीट चेक करते हो, सब चीज पॉलीग्राफ टेस्ट में आई थिंक। ट्रू ट्रू वही। ठीक है वही। सिक्योरिटी टाइटन इन कश्मीर कर्ब्स ऑन पीपल्स मूवमेंट इंटरनेट अनलाइकली ऑन रिपब्लिक डे। So, in spite of normalization in Kashmir, there is a threat of the non-state actor and radicalization in the society. इसमें they can be threat on the important VIPs and the atmosphere of the Kashmir. उसके लिए कुछ measures लिया जाता है by the administration. तो इसी में लिखा CCTV camera has been installed, drones have been deployed, frisking, searches of vehicle, barricade in every 1 to 2 kilometers. तो ये सब तरीका होता है by the local administration. तो सैड शिरोमणि अकाली दल, उनका आइडियोलॉजी सिख स्पेसिफिक रहेगा। आप पार्टी पता है, कांग्रेस नेशनल पार्टी। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी is an unbiased platform working towards the best management of water resources, said यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अभी वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें ऑल इंडिया सेक्रेटरीज, वहां पर बात हो रहा था विद रिगार्डिंग टू द कैचमेंट एरियाज, कैचिंग ऑफ द रेन, वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ टू कंजर्व द वाटर, इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड साथ ही जब बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एक्यूफायर मैपिंग। एक्यूफायर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां कैसे यूज कर सके विद रिस्पेक्ट टू द इरिगेशन फैसिलिटीज, हेल्प करते हैं। फिर द ग्राउंड वाटर सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री हैज इम्प्रूव्ड and there has been drastically reduced the number of overexploited and critically grounded. There's a word, critical groundwater areas overexploited. तो वाटर यूज मैनेजमेंट में रेगुलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सब्सिडीज दिया जाता है वाटर यूज में, तो उसको कम किया जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन है 80% एग्रीकल्चर में होता है, 10% इंडस्ट्री और बाकी सब में अर्बनाइजेशन में 10% होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें डिमांड साइड में रेगुलेटिंग होना चाहिए rather than सप्लाई मैनेजमेंट। His right to establish minority institution contingent on state recognition. Supreme Court to government. CGI DY Chandrachud ji have said, heading a 7-judge bench. 7-judge bench, important इसका मतलब डिसीजन आएगा whether a minority community right to establish education institution or university be dependent on state recognition with regarding to the AMU minority status. इस पे बात हो रहा है। आर्टिकल 30 में बात करते हैं कि दे हैव द राइट, माइनॉरिटीज में दो, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटी। दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट। यस प्रोफेसर, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट, सिर्फ यार भी रिलीजियस। 4 तरीके की यूनिवर्सिटीज की बात होती है कि जो कितना एड लेते हैं, रिकॉग्निशन लेते हैं, या फिर फुल एड लेते हैं, या फिर एड ही नहीं लेते हैं। तो अलग अलग प्रोविजन है। और यहाँ पे जो 7 जज बेंच है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, क्योंकि 4 जज से जब भी ऊपर बैठेंगे, सो दैट विल यस, सिग्निफाई दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो इसमें बात हो रहा है कि वेदर यू सीक रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन और रेगुलेटरी स्टैट्यूट, the award of the degrees, course of the study, the length, duration, aid from the state, qualification and experience of faculty, all these would be according to the regulatory statute। मतलब कि लॉ कुछ प्रोविजन होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर में रेगुलेशन होना चाहिए।
even the minority institution. Even minority institution should not fall below a national standard. But can the right to establish minority institution be contingent on recognition by the enabling statute? The court has asked that state recognition of the university and setting up of a law of one under a law would necessarily deny an institution minority status, despite the fact that it was founded by the member of religious or linguistic minority. दो minority की बात होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में. Both have not been defined by constitution. लेकिन बात करते हैं कौन होंगे माइनॉरिटी, ये डिफाइन नहीं है, लेकिन ये बात करते हैं कि तो इसमें ओवरऑल क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि there has to be some standard with regarding to the minority institution, right from degree, study, qualification of faculty, etc. उसको रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है अंडर द पार्लियामेंट्री लॉ. एक ये डिबेट हो गया. दूसरा डिबेट ये है कि अगर आप पार्लियामेंट्री लॉ के तहत आप बना रहे हैं इंस्टीट्यूशन, तो क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है? फिर तो वो एक तरह से नॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो गया जो सबके लिए पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर. तो ये इसी पर ही 7 जज बेंच बैठेंगे. उसी किसी अभी किस में कंसिडर किया जाता है ये हमें, किसमें? मतलब करंट में किस में कंसिडर किया जाता है? माइनॉरिटी होंगे अभी. लेकिन इस पर कंटेंशन हुआ था, इन्हीं पर बात हुआ था. सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डायरेक्शन कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में तो दे कैन बी पीपल फ्रॉम द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी बैकग्राउंड. रिलीजियस एस्पेक्ट में आप माइनॉरिटी का ओवरऑल एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए कि वो रिलीजियस टीचिंग के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो इंस्टीट्यूशन के अंदर में वो तो सेकुलर होता है. तो ये अजीज भाषा केस 5 judge bench 1967 had held the AMU was a central university and not a minority institution. लेकिन मतलब 1967 में बोला कि एएमयू सेंट्रल इंस्टीट्यूट है लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं कहलाया जाएगा. लेकिन 2006 में पार्लियामेंट ने इनैक्टेड द लॉ और इसमें एएमयू अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें 1981 इंदिरा गांधी के समय तो उनको वापस से मिला माइनॉरिटी स्टेटस. 2006 में इलाहाबाद कोर्ट struck down the provision 1981 law by which the university was accorded the minority status. अब ये चल रहा है. इसका मतलब अभी इलाहाबाद कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है कि उनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो पार्लियामेंट ने अपने लॉ के हिसाब से लाया. और पार्लियामेंट जब लॉ लाते हैं तो इट हैज टू बी सेकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन. वहां पर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए. अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिला है तो इसी पर क्वेश्चन उठ रहा है, अभी चर्चा चल रहा है कि पार्लियामेंट जब लॉ लाएंगे तो क्या माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकेगा उन्हें कि वो नेशनल स्टेटस मिलेगा, नेशनल यूनिवर्सिटी मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा स्टेटस. ठीक. इसमें औशिक ये होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ ला रही है तो इन दैट minority will have the upper hand, but along with that the majority will also not be denied to get the admission. For an example, we have Khalsa colleges. They are minority institutions, but Khalsa colleges are the part of central universities like Delhi universities and other. So in those colleges and the institutes, the majority of the seats are reserved for the Sikh community, but there are number of other seats around 25 to 30% which are available for the majority section also. So when the parliament is bringing such kind of law, both the minority as well as the majority do have the right. But when a particular law regarding the state government is coming for the minority, there can be reservation only for the minorities. So that is a thin line of difference. तो एएमयू हो गया, बात हो गया खालसा कॉलेज एंड सेकंड इज सेंट स्टीफन. इस पे बात होता है. अष्टमुदी लेक. अष्टमुडी लेक इट इज इन तमिलनाडु, राइट? और केरला में, तमिलनाडु होना चाहिए. सर्च कर लो एक बार. मोस्टली अष्टमुडी लेक. वाइल्ड ये टस्कर. केरला में. हाँ.
important important location for the migratory species of the bird Ashtamudi lake. ये इनके बारे में एक बार सर्च कर लो, आप बोल दो। वाइल्ड टस्कर पदे अप्पा रेड्स 2 शॉप्स एट मन्नर। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल तो कल डिस्कस किए विथ रिस्पेक्ट टू कि लोकल एलिफेंट, द एलिफेंट दैट हैज बीन रेज्ड कैन बी ट्रेन्ड फॉर टैकलिंग द वाइल्ड लाइफ एनिमल वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इशू। कुमकी एलिफेंट इसको बोलते हैं। Delhi High Court recalls order allowing women to abort 29-week pregnancy. So, regarding to the abortion, right to life of the fetus versus the bodily autonomy choice of the women, of the mother. So, right to life, Ms. Bharti assured that the court that center would give all assistance to pay all the medical costs and other incident delivery. तो ये हम लोग बात करते हैं कि 24-26 वीक के पहले आपके पास राइट है कि आप अबॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद कमेटी बैठेगा विद रिस्पेक्ट टू द टू स्पेशलिस्ट दैट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कमेटी रिकमेंडेशन कि आपका अबॉर्शन करना है कि नहीं आफ्टर 28 समथिंग वीक्स। उसके बाद यू हैव टू गो टू द कोर्ट। 22 और 24 वीक्स के बाद ही हाई कोर्ट या फिर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो 2024 सर्विस है उसके अकॉर्डिंग। 24 The report also indicated the woman is suffering from depression, mental health. Women has not given any report suggesting that ongoing pregnant delivery will cause grave injury to her mental issue, which is necessary for the giving permission for the termination of pregnancy exceeding 20 weeks. So ultimately, report by the medical practitioner or report by the specialist will decide कि उनके पास अफेक्ट होगा कि नहीं। FEMA case, Foreign Exchange Management Act. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग अष्टमुडी लेक, ये केरला का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर वेम्बनाड लेक। एंड ऑल्सो जो फेमस बैक वाटर एंड हाउस बोट रिजॉर्ट्स हैं केरला के, उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है रामसर साइट। रामसर साइट, ट्रू। FEMA case is related to the financial violation, foreign exchange मैनेजमेंट है। कुछ पर्टिकुलर डिसीजन दिया जाता है कि इतने रुपीस यू कैनॉट एक्सचेंज फॉर, आप $1 लाख के ऊपर आप लेके नहीं आ सकते हो बाहर में। ऐसा एक लॉ के अंदर में होता है फेमा एक्ट। FCR है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है 2010, वो डिफरेंट है फेमा से। ED of the agency if the law has been violated or not। ED के अंदर पावर है, FCR है, फेमा मनी लॉन्ड्रिंग केस PLM है 2002। Larger message to New Delhi from the Red Sea. Houthi attack on the MV Chem Pluto, an oil tanker, and MV Sai Baba. It was a message, as stated by Happyman Jacko. He is a commentator on the policy research and international relation. Indian Navy has deployed guided missile destroyer. Destroyer का नेम मारमुगिया, कोची, कोलकाता सिटीज के ऊपर रहता है। इम्फाल भी डिस्ट्रॉयर ही है। तो एक्शन रिएक्शन मोड से न्यू दिल्ली को अलग हटके सोचना पड़ेगा। लार्जर क्वेश्चन वी मस्ट पॉन्डर कि हाउ वी शुड कंट्रोल दैट। इट हैज टू गो बियॉन्ड द ओकेजनल फायर फाइटिंग, कि जब एक्शन होगा हम लोग रिएक्शन देंगे। उससे ऊपर जाना होगा विथ रिस्पेक्ट नेवल एक्सरसाइजेस विद फ्रेंडली नेशन, या पहले से एंटी पायरेसी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वहां पे। India new true front solution is not Pakistan and China.
बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम चैलेंज है। कितना इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डिफरेंट एरिया में इसको लिख दिया गया है इन नायर। हमेशा टू फ्रंट वॉर बोलते हैं तो हमेशा पाकिस्तान चाइना दिमाग में आता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि टू फ्रंट वॉर कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम चैलेंज भी दर्शाता है। उसको भी टू फ्रंट वॉर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। You have to go beyond the thinking of the maritime, beyond the continental domain, जैसे मुगल के पीरियड में था कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश के पीरियड में मैरिटाइम, और इन अभी आफ्टर 1947 वी आर फोकसिंग बोथ ऑन मैरिटाइम एंड कॉन्टिनेंटल अफेयर। बीजिंग is building his empire influence in the ocean region, Indian Ocean region, जैसे research vehicle have been docked in the Maldives and also in Sri Lanka पिछले साल वहां पर। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है बीजिंग का इन द इंडियन ओशन रीजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, राइट फ्रॉम म्यांमार, हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका, मालदीव्स, देन दीबाउती, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, त्योकप्यू पोर्ट म्यांमार में, फिर बांग्लादेश ऑल्सो एंटरिंग द BRI चाइना का, चाइना मालदीव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इट इज बी इंक्रीजिंग। हॉर्न अफ्रीका में दीबाउती, श्रीलंका, सेशल्स एंड मालदीव्स। China action will amount to containment of India in Indo-Pacific region. Two things stand out. India assessment of the Chinese strategy to contain India in continental space in South Asia is not a misplaced one. बस sufficient नहीं है। हम लोग में सोचते हैं LAC नॉर्थ में, जो बोमडीला, नाथुला एक्सेट्रा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से लेकर के आप डेप्संग वैली, लेकिन हम लोग सोचना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मैरिटाइम डोमेन। China is parallelly attempting to contain India larger maritime threat as well. तो पहला टू फ्रंट वॉर मैरिटाइम एंड कॉन्टिनेंटल। दूसरा बीजिंग इन अटेम्प्ट इज टू इन्फ्लुएंस अमंग द अदर्स द कंट्रीज दैट इंडिया हैज हिस्टोरिकली engaged with. Indian Ocean region was India's traditional sphere of influence until the Chinese came in with goodies, that is deep pockets. Far off regions such as Africa had a historical culture political links with India, Madagascar, East Africa, Horn of Africa, Oman, Yemen, etc. Even rupees was considered as a method of exchange in Oman, Yemen before 1950s. लेकिन आज there has increased Chinese domination in that part. New Delhi should make a coalition with the like-minded countries. Second, India cannot balance China in the Indian Ocean region by itself. सही बात है। That is why India is talking about the Quad integrating itself into the overall structure of the world। जैसे आप ऑकस के साथ भी बात हो रहा है, Quad स्पेसिफिक बोल सकते हैं मैरिटाइम एक्सरसाइज विथ सेशल्स and Mauritius, Madagascar, etc. Enhancing partnership like-minded nation perhaps the important way forward. जैसे for example US led Operation Prosperity Guardian. New Delhi decision not to join it because of the strategic autonomy of New Delhi with regarding to this region. अगर आप ज्वाइन कर दोगे इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यूएस एक हेजेमन है इंडियन ओशन रीजन, जो इंडिया कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंडिया हैज own vision for the Indian Ocean region, that is. लेकिन ultimately India have to become part of the coalition for tackling Chinese threat in Indian Ocean region. Overall article का ये व्यू पॉइंट है and I agree with it. Limits and border center must consult states before decision on the that impinge on their powers. Regarding the BSF Act, इसमें बॉर्डर्स में 50 किलोमीटर्स अंदर में सर्च एंड सीजर्स देयर पावर हैज बीन इंक्रीज्ड तो मेनी ऑफ द स्टेट्स, फॉर एग्जांपल दैट टाइम राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा were alleging that center is increasing the role and reducing the jurisdiction of the state, that is
infringing on the rights of the state. Punjab has filed a suit under Article 131. 131 डायरेक्टली ओरिजिनल, पुलिस role. हाँ पुलिस रोल उनके अंदर में आता है, स्टेट का आता है, और 131 ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 131 आर्टिकल, challenging the decision to increase the operational jurisdiction from BSF 15 किलोमीटर to 50 किलोमीटर. सेंटर हैज गिवन व्यू पॉइंट, पहला कि सिक्योरिटी इंप्लीकेशन हो सकता है इन द बॉर्डर रीजन, इट इज, और सेकंड to tackle the challenges, for example, trafficking of human, drugs, animal trafficking, there has to be some form of deterrent put in by the central forces. तो BSF के लिए उन्होंने किया. The border state sees the center move as a breach of federal principle, discussed. Encroachment into the law and order of the Punjab police. Police is a state subject, that is why state is criticizing this decision. पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, जहां पर 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर किया गया, वेयर बाई गुजरात में 80 से 50 किया गया, वेयर राजस्थान के लिए 50 रखा गया. The role of the BSF in that region mainly focuses on preventing trans-border crime, especially unauthorized entry into exit from the Indian territory. It does not have the power to investigate and prosecute offender. That is the role of the police. But it has the power to hand over the arrested and contraband seized from them to the local police. ये specific clear cut distinction है, the role of BSF and police. इसको याद कर सकते हो. उनके पास पावर नहीं इन्वेस्टिगेशन का, उनके पास पावर है Under बस. the state हाँ, list of 7 schedule. Ask a question. बोलो. So I wanted to ask a question to Yoshik here, that like why only the specific 50 kilometers jurisdiction have been extended for the BSF? Why not more? And if the 50 kilometers have been carved out, so what are the major areas of actions the government of India would take to control the situation here? Like the reason behind 50 kilometers. I have only The one normal reason. reason we know the security and interest, but specific reason, what could be those? Specific reason 50 किलोमीटर बात कर सकते हैं कि विथ रिगार्डिंग टू द Yes. इंडियाज चिकन नेक 25 किलोमीटर वाइड है, तो 50 किलोमीटर रेडियस वहां पे इंक्लूड कर सकता है उसको भी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आंसर. No, I mean I was asking. Okay, so we can look at it later on. स्पेसिफिक होगा अकॉर्डिंग टू द मैप डेटा कि इसी क्योंकि 80 to 50 भी किया है, कुछ जगह 50 to 50 किया, कोई 50 छोड़ दी, इसलिए. What factor has been taken into account while determining the local limit? हाँ पूछा, स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली, आपने मेरे से पूछा, स्टेट गवर्नमेंट has asked the center what factor has taken into account while determining the local limit of the area adjoining the border of India. बताइए. The most relevant question in the Supreme Court is whether center notification is encroaching upon the state government domain with regarding to the law and order under the police state subject के अंदर में. दूसरा टेरिटरी 50 किलोमीटर रेडियस, उसमें सर्च एंड सीजर. No, this is not an encroachment. The reason being we have already the articles. सुप्रीम कोर्ट है, मतलब Article वहां पर 3, क्वेश्चन है ये चीज 5. प्रवेश. तो Yes. हाँ हम लोग का व्यू पॉइंट हो सकता है कि इट इज नॉट एन इंक्रोचमेंट, देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड फॉर द मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया हो सकता है, लेकिन इट इज सब जजेस. अभी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लेना बचा है. आफ्टर दैट वी कैन. Yeah. The truth about the India booming toy export. Before that, India was a net importer of the toy, mostly from China. Toy export was promoted during the Make in India regime, increased by 240%. Import declined by 52%. India became net exporter. ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इन सक्सेस ऑफ द मेक इन इंडिया एंड हाउ टू डील विद चाइना. छोटा सा एग्जाम्पल कि टॉय एक्सपोर्ट में इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया मेक इन इंडिया में. तो क्यों किया, तो दो रीजन दिया है. अंडर द IIM इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट लखनऊ का रिपोर्ट के हिसाब से DPIIT के क्रेडिट द एक्सपोर्ट सक्सेस टू द प्रमोशन ऑफ वेरियस एफर्ट मेक इन इंडिया. एंड सेकेंड इज बाकी अवेलेबल नहीं है डोमेन में. How it happened? हाँ, Can दो I reason. First state being the 2 reasons?
हाँ यहाँ पर Two reasons. So number one reason is that within the 50 kilometers of jurisdiction, the government of India, under the jurisdiction of the BSF, will implement the critical infrastructure that can reduce the politics and criminal nexus in that area. Number one. And second, it has been noticed by various commissions that the police administration have some direct linkages in these organized crimes. If we take the example of Punjab, where the DGP level officer were caught in such nuances, in such instances. So to have more control over the greyhound workers in these areas, because the 50-kilometer jurisdiction is just to control the area which is very much in proximity and intimately concerned with the international borders. So they have the direct linkage, direct language, direct customs and traditions. So they have more affinity toward these communities and that propagate these crimes. So these are the two specific reasons cited by the Okay. MHA. Okay. With regarding to the India's net export in the toy sector, दो reason है. First being protectionism. Rise of import duties could reduce demand of toys. Second is alternative investment, that is increasing the capacity and augmenting the labor productivity. Increasing labor productivity to boost the competitiveness. इसके कारण हो सकता है. नॉन टैरिफ बैरियर एनबीटी और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर. मैंडेटरी सप्लाई टेस्ट ऑफ ईच इंपोर्ट कंसाइनमेंट. इसके कारण there has been increase net exporter over 1300 crores रहा है. So all these areas are there. एक important कीवर्ड है रेंट सिंकिंग, लर्निंग बाय डूइंग. इसमें बात हो रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म कैन वर्क फॉर द लिमिटेड पीरियड. लॉन्ग टर्म के लिए आपको एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इट इज फॉर लर्निंग एंड डूइंग. आप करिए, कंपेयर करें बाकी सब कंट्री से, उसके हिसाब से आप पॉलिसी में ट्विक करिए. प्रोविजन फॉर लोकलाइज इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्पेसिफिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टिमुलेट सर्कल ऑफ एक्सपैंडिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटी टू फेस द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज की बात होता है, हब एंड स्पोक मॉडल का बात होता है विद रिस्पेक्ट टू टॉय इंडस्ट्री. The toy industry is an example of making India policy, and rising tariff, non-tariff barriers have made it possible. कुछ क्वेश्चन है with regard to latest to editor. The consecration is a purely a religious and definitely a personal affair. By the way, the Prime Minister, Union government, and state government exhibited the extraordinary involvement of the event has ensured the political color of the event has overshadowed the religious character of the occasion. दूसरा, as a follower of the Hindu religion, it was a memorable moment for me to witness the India consecration. But state-owned function through which also there is a movement for extreme anguish and trepidation as the beginning of end of the country's cherished reputation of worldwide holding secularism in its blood and breath. One would fervently hope, as the editorial forcibly insisted upon, the Ram temple must help in healing wound and creating harmony. तो रेंट सीकिंग जो यहाँ वर्ड था उसका मीनिंग होता है कि इट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन विच डिस्क्राइब इंडिविजुअल एंटिटी ट्राइज टू इंक्रीज द वेल्थ without providing any benefit to society. For example, companies